Hi guys, welcome back to the channel. So we have started the principle of cancer treatment. We have finished with the mechanism of how cancer kills. Okay, chalo, let's start. So last class we have seen principle of cancer treatment. The protocol of the therapy for each tumor depends on the multitude of factors, that was size, anatomical location, presence of metastasis, histologic grading and general health of the patients. और ये जो जनरल प्रिंसिपल है हर एक मोडालिटीज़ के लिए डिफरेंट है. तो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द सर्जिकल प्रिंसिपल. Surgery remains the most successful therapeutic modality for oral squamous cell carcinoma. As we are dealing mainly with head and neck cancer, so most common is oral squamous cell carcinoma. So we will mainly focusing all the principle on oral. We will be dealing general also, but we will be focusing on oral squamous cell carcinoma mainly. Okay, so surgery is the most successful therapeutic modality for oral squamous cell carcinoma. Okay. Now, it is an accepted principle that squamous cell carcinoma have a biologic behavior that is progressively more aggressive the more posterior the location in the foregut. तो ये ऐसा माना गया है कि जितना पोस्टीरियर फोरगट में ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा उतना ज़्यादा वो एग्रेसिव होगा. ओके, that the biological behavior that is progressively more aggressive the more posterior the location in the foregut. Okay, now a squamous cell carcinoma of the lower lip tends to be more exophytic, slower growing and very late to metastasize. और अगर लोअर लिप का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है देन इट इज़ मोर एक्सोफाइटिक, स्लो ग्रोइंग एंड लेट टू मेटास्टासाइज. ओके, now squamous cell carcinoma of tonsillar fossa tend to be less differentiated, exhibit early infiltrative spread and are associated with clinical or occult metastasis. So different type or different location of the oral squamous cell carcinoma behave differently. तो टॉन्साइलर फोसा के बारे में ऐसा बोला गया है कि इट इज़ लेस डिफ्रेंशिएटेड एंड दे एग्जिबिट अर्ली इन्फिल्ट्रेटिव स्प्रेड एंड शो क्लिनिकल और ऑकल्ट मेटास्टासिस. Now, accepted general principle of head and neck cancer surgery. First is excision of the tumor must include excision of the subnormal tissue, the amount of which depends on the characteristic invasion pattern of the particular tumor. तो अगर हम लोग किसी ट्यूमर को एक्साइज कर रहे हैं उसके साथ हमको एक नॉर्मल टिश्यू भी एक मतलब कुछ अमाउंट ऑफ नॉर्मल टिश्यू भी लेना है और वो जो अमाउंट है नॉर्मल टिश्यू का वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक इन्वेजन पैटर्न क्या है. अगर वो नर्व न्यूरल है तो वो नर्व इन्वेजन है तो हमको वो इंक्लूड करना है डिपेंडिंग ऑन द इन्वेजन पैटर्न ऑफ द पर्टिकुलर ट्यूमर. Now, en-bloc excision refers to the removal of a tumor encased within a periphery of normal tissue. En-bloc excision भी उसी को बोलते हैं, that is the removal of tumor encased within a periphery of normal tissue. The periphery should appear normal clinically and on microscopic examination with frozen section. Okay. In oral squamous cell carcinoma, the en-bloc principle often translates into removing the primary lesion with its draining lymphatic and lymph node chains contained within the facial envelope of the neck. तो oral squamous cell carcinoma का जब हम en-bloc resection बोलते हैं तो उसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम लोग प्राइमरी लीजन रिमूव कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग उसका ड्रेनिंग लिम्फैटिक और लिम्फ नोड चेन भी रिमूव करेंगे विच इज़ कंटेन इन द फेशियल एनवेलप ऑफ द नेक. ओके, दैट वाज
We'll be continuing और भी general principle है about surgery. We'll be continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.